with one of my mentors in chemistry, a PhD in organic chemistry, and we together over a period of almost 2 years bring in a laboratory scale production of its kind, first time ever in India, a steroid molecule. All these steroids were imported back then from America, Europe and China. And we just took a step into this steroid manufacturing in 94, 95. And it all started with a backyard of my father's clinic. He's a doctor, and I looked at him and I said, for my quick and dirty experiments, I want to take your one of the rooms in the clinic. And he hesitantly, of course, approved it, but that proved to be very auspicious. And when the chemistry started looking good, we got into a very mediocre non-GMP laboratory setup. We were producing 1 kilo of that steroid molecule every day, and it took us good 7-8 years to get into the mainstream pharmaceutical companies within India. But only when some of the MNCs rejected our laboratory setup, I decided to basically come up with first ever industrial scale steroid GMP plant. And thanks to State Bank of India as a great institution who helped me at a crucial time when we were only a 3 crore company in 2003, and how they handed over a 5 crore of a facility, an exposure on Symbiotec. So I think that's one bank that I look back and really have a tremendous respect for. They have the risk-taking appetite. They are an institution which has built companies like us. It's an important milestone event of the company. Before we start, just to summarize the key issue details. The price band for the IPO is Rs 938 to Rs 988 per equity share of value Rs 2 each. The issue opens for subscription on August 24th, Monday, and closes on August 27th, Thursday. The issue is a combination of fresh issue of 150 crores and an offer of sale of about 1,607 crores. The market cap of the company at the top end of the price band would be about 6,350 crores. It is my pleasure to introduce the management team today to walk us through the opportunity and details of the company. Please welcome Mr. Anand Sathwani, CEO and Managing Director and Promoter. Krishna Sathwani, Head of BD Injectables. Mr. Raghavendra Ramchandran, the Chief Financial Officer of the company. Shubham Sabu, General Manager Finance. And Mr. Kapil Mishra, Head of Strategy. Over to you. The founder and managing director of Symbiotec Pharmalab. Thank you for hosting us here today. I'd like to give you context on Symbiotec Pharmalab, our journey, what we have done in the past and what we currently do and what we intend to do in the future. Symbiotec essentially is an R&D driven pharmaceutical and biotechnology company where we have achieved the global leadership. As Arun mentioned, as an API company, we've long been aware that we capture a very small percentage, right? It's around 2 to 5% of the total value of the medicine that we have created. And that led us to ask a very fundamental question, which was, how do we use our deep scientific expertise to move upstream and get a larger value share in the medicines that we have created? And when we look back, we said, we've been practicing 2 sciences which we've mastered over the last 2 decades. One being the sterile lyophilization science, and the other one being the sterility science. These are no ordinary capabilities, might I add. They have a very high barrier to entry, highly regulated, and form a foundation of what we've built today, which is a drug device capability in the form of dual chamber vials, which you see on the screen. And of course, our growth ambitions don't just stop here. We do have incrementally innovative products in our pipeline, including dual chamber bags and dual chamber syringes, which will be coming next. What's unique about this particular platform is that it is a very differentiated device, right? And we would be the only company to be producing these
besides the innovator. And especially coming from a company of our size and scale, this means a lot. At the same time, we have a contract in place with one of the large pharmaceutical companies for select regulated markets who would be marketing and distributing this product for us. These are what is called in the market as RTU, which are ready to use and ready to dispense products. And of course, because of the higher sterility assurance that they provide and the convenience at the time of administration, they command a premium. When we were deciding to enter in this space, we did have a question being asked to us that why don't you want to take your own API and put it in a conventional single chamber vial? Myself Anil Satwani, मैं Symbiotec Pharmalab फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। और हमने हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स API बिजनेस में एक ग्लोबल लीडरशिप को स्थापित किया है पिछले 20-25 सालों में। और हम एक R&D ड्रिवन फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। और हमारे ईथोस में हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग स्केल के ऊपर और जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, इन तीनों चीज़ों को मिला के हमने ग्लोबल लीडरशिप को हासिल किया है पिछले 20 से 25 सालों में। और यही DNA हम सक्सेस का अगले नए कुछ वर्टिकल्स में डालना चाहते हैं, जहां हमने अपने APIs को अपनी फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट किया है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल बोल रहे हैं। और एट द सेम टाइम हमारी जो साइंस, केमिस्ट्री और फर्मेंटेशन जिसके बुनियाद पर हमने ये व्यापार खड़ा किया है, उसमें से फर्मेंटेशन को हम आगे लेके जा रहे हैं। और जहाँ हमने बहुत बड़ी स्केल, जहाँ पे 1 लाख लीटर के सिंगल फर्मेंटर्स जैसी स्केल को स्थापित करके, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को स्थापित करके कुछ नए सेगमेंट्स में जा रहे हैं, जैसे हम बायोलॉजिक्स नाम से जानते हैं, जैसे हम बायो फार्मास्यूटिकल्स नाम से जानते हैं, और एक बायो मैन्युफैक्चरिंग नाम की जो नई दुनिया स्थापित होने लगी, जिसे हम बायो इकोनॉमी भी कह रहे हैं, और उसमें भी हमने एक एंट्री ली है। तो हमने 2 नए ग्रोथ इंजन्स को हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और हमारे रेगुलेटरी कंप्लायंस को आगे ले जाते हुए, जहां हमने इंजेक्टेबल और हमने फर्मेंटेशन बेस्ड नए वर्टिकल्स को जन्म दिया है। और आने वाले कुछ ही सालों में ये अपने आप में बहुत बड़े बिजनेस वर्टिकल्स बन जाएंगे। और आज हमें बहुत गर्व है कि हमने हिंदुस्तान को सेल्फ रिलायंट बनाया है एक लाइफ सेविंग ड्रग्स में, जहाँ हमने कोविड में जब आपने काफ़ी रेमडेसिविर और कुछ और इम्पोर्टेड ड्रग्स की शॉर्टेज के चलते काफ़ी हमें समस्याएं आई, लेकिन स्टीरॉयड जो हमारी फर्स्ट लाइन थेरेपी थी कोविड में, वहाँ पर किसी को इसकी शॉर्टेज महसूस नहीं हो पाई। और उसका कारण सिर्फ एक है कि सिम्बायोटिक रिलेंटलेसली 24/7 उन स्टीरॉयड ड्रग्स को राइट फ्रॉम सोयाबीन डेराइव्ड स्टेरॉल जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं थ्रू इट्स फर्मेंट लगातार बनाए जा रहे थे। और उस वक्त शायद ऐसा लगा कि सिम्बायोटिक का जन्म ही शायद इस पेंडेमिक से अपने देश को बचाने के लिए हुआ होगा। और हमने एक योद्धा की तरह लड़ते हुए पूरे हिंदुस्तान को उस सारे सालों में बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के लगातार प्रदान किए। तो बहुत गर्व है कि हमने लाइफ सेविंग ड्रग्स, स्टीरॉयड्स को, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया है, अपने देश की सेवा की, और नॉट ओनली अपने देश को और इंटरनेशनली हमने अपने आप को स्थापित किया। और इसी सक्सेस DNA को आगे बढ़ाते हुए हम इंजेक्टेबल और फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स और CDMO में लेके जाना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है। Tell us about the IPO offering also. IPO when ऑफरिंग्स it's हमने 1700 करोड़ रुपए का IPO का साइज़ है टोटल, जिसमें कुछ 150 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी अपने अंदर एज अ प्राइमरी इन्फ्यूजन ले रही है, और बाकी कुछ हमारे जो प्राइवेट एक्विटी इन्वेस्टर्स जिन्होंने कई सालों से, दशकों से हमारा साथ दिया है, उनकी एक पार्शियल एग्जिट भी इसके माध्यम से होने जा रही है। टोटल IPO साइजिंग इज 1700 करोड़ के आसपास। So what are your expectations from Gujarat? मैं आप सब लोगों को गुजरात, वैसे भी गुजरात का मध्य प्रदेश के साथ एक बड़ा प्यारा सा संबंध है, अनुबंध है। और हम एटलीस्ट मेरी कंपनी में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी लोग गुजराती हैं जो हम काम करते हैं। और मेरे अपने गुजरात भाइयों से यही प्रार्थना है कि यही गुजारिश है कि इस जर्नी में, इस जर्नी ऑफ टेक्निकल एक्सीलेंस में मेरा साथ दीजिए। और हम अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। इस यात्रा में अगर आप मेरे साथ होंगे तो मेरा बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। Okay, sir.